Hello बच्चों, let's read the question. The binding energy of a hydrogen atom considering an electron moving around a fixed nuclei is B is equal to me4 8n square epsilon naught square h square. If one decides to work in a frame of reference where the electron is at rest, the proton would be moving around. Like electron is at rest and proton is moving around it. By similar arguments, the binding energy would be B is equal to minus me4 8n square epsilon naught square h square. M is equal to proton mass. This last expression is not correct. They said this expression is not correct because n would be an integral. Bohr quantization applies to electron. The frame in which the electron is at rest is not identical. The motion of the proton would not be in circular orbits even approximately. So if we talk about the key concept of the question, like what is the key concept for this question? की कंसेप्ट देखो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इज बेस्ड अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? फोर्स विच एक्ट अलोंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. वो फोर्स बेटा जो सेंटर पे लगे. नाउ वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज negligible as compared to proton. Like mass of electron is really very small as compared to mass of proton. So the centripetal force cannot provide, so this centripetal force will not provide any electrostatic force. Okay, so this will not provide any electrostatic force. So here force will be equal to F of P is equal to what? M of P V square upon R. Okay, this is equal to mpv square by r. So what would be? So the given expression is not true. This equation is not true. Which, like frame in which we can say the frame in which electron is at rest is not inertial. This equation is not true according to centripetal concept. Okay, as it form non-inertial frame of reference. क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहा है. क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रियली वेरी स्मॉल देन द मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्मॉल है, तो उसकी बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स भी बहुत ज्यादा स्मॉल रहेगी. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली लेसर देन द फोर्स ऑफ प्रोटॉन. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि द फ्रेम इन विच द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट इज नॉट इनर्शियल. बिकॉज इट इज इनर्शियल, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं? कौन सा ऑप्शन हमारा इस केस में ट्रू रहेगा? दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. विश यू लक.